Okay, right. So today we are going to learn about Ruku, how to do Ruku in namaz. In the previous three lessons, we learn about how to start prayers, how to do takbir tahrima, that is how to say takbir tahrima, that is of saying Allahu Akbar while starting the prayers, and then we learn about how to do qiyam and how to recite Quran during the qiyam, how to recite Surah Al-Fatiha. In the last three videos, you can find this information. And as soon as we finish recitation of Quran, what we are supposed to do is to go for the next step that is called Ruku. And as you can see on the screen, the Ruku means here to bow. And this part of namaz is in the category of Farz. Okay, before we start our lesson, let me show you the previous three videos and let me show you how to find out those videos. इससे पहले कि मैं लेसन स्टार्ट करूं, मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये जिन तीन वीडियोस की मैंने तीन लेसन्स की मैंने बात की है, जिसमें मैंने तकबीर तहरीमा की बात की है, जिसमें मैंने क़याम की बात की है, जिसमें मैंने रिसाइटेशन ऑफ कुरान यानी क़िराअत की बात की है। तो वो जो आप हमारा ये जो चैनल है, आप हमारे चैनल पे जब जाएंगे तो ऊपर आप इस तरह से देखें, यहाँ पे नाम आ रहा होगा और कुरान पाक की आयत आ रही है, फला यतदब्बरून अल कुरान। और इसी पर जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे, ये अभी मैंने छोटी स्क्रीन की हुई है, तो आपको इस चैनल के कंटेंट्स शो हो जाएंगे। ऊपर होम है, उसके बाद वीडियोस हैं, उसके बाद शॉर्ट्स हैं, उसके बाद आप जैसे कि आपके मोबाइल में इसका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस शो होगा डिपेंड करता है, आपने जाना है प्लेलिस्ट पे। ये प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आप देखें कि ये नीचे दो प्लेलिस्ट आ रही। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश हुआ, देखें इसमें जो दो प्लेलिस्ट आ रही हैं, इसमें जो फर्स्ट पे लेके जाता हूँ तो ये प्ले ऑल का बटन आ जाता है। इसके नीचे देखें लिखा हुआ है हाउ टू प्रे साला इंग्लिश उर्दू। ये वाली जो है, इसको अगर हम देखें तो इसकी पहली वीडियो ये आपको शो करेगा। ये फर्स्ट वीडियो है और इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि फेसिंग द किबला, स्टैंडिंग फेसिंग द किबला प्री कंडीशन है ये, और मेकिंग इंटेंशन। इसके बाद जो अगर ये सीरीज में आप देखना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये पूरी सीरीज नीचे नजर आ जाएगी। देखिए ऊपर हेडिंग आ गई है हाउ टू प्रे सला इंग्लिश उर्दू, और उसके बाद पहली वीडियो आ रही है हाउ टू स्टार्ट सला, दैट इज तकबीर तहरीमा, एंड नंबर टू हाउ टू स्टैंड अप फॉर कियाम, दिस वाज द सेकंड स्टेप। And for the third step, you can see another video is added there. Number three, how to recite Quran in Salah. ये चीजें हम कर चुके हैं, तो आपने भी इसको YouTube पे जाकर इसको देखना है और चाहे तो इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, आज की वीडियो भी हम इसी तरह से रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो नंबर 4 यहाँ पर ऐड हो जाएगी। चलें अपने लेसन की तरफ आ जाते हैं। हमारा जो लेसन था वो रुकू के बारे में है, और आपको तो रुकू करना आता है, लेकिन मुझे इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी है। सबसे पहले जो लोग इंग्लिश समझते हैं वो समझ लें कि रुकू का मतलब होता है टू बो, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू while you are bowing, say Allahu Akbar while bowing. And if you say Allahu Akbar, this saying is in the category of sunnah. Now to say Allahu Akbar while bowing is sunnah. Okay. And how to do it? Bend down so much that you just put your hands on your knees. Yeah, I'm talking to ladies only, not gents. So ladies are supposed to only touch their knees. That's it. They are not supposed to hold both of their knees with their hands. No, never. And this is this sunnah for ladies. Okay. What about the fingers? Keeping the fingers together while placing the hands on the knees in ruku. वो कह रहे हैं कि इसको खुला रखें, वो सॉरी इसको मिला कर रखें, fingers together. Now if you do it, if you keep your fingers together while touching the knees, this act is in the category of sunnah. Okay.
How many number of sunnahs we are learning now? Thanks God. And now move towards the next sunnah. Now, do not stress the knees while bowing. Yeah, do not stress the knees. Do not keep the shins straight in the ruku. You understand what do you mean by shins? That is bending the knees a little bit. You're supposed to bend your knees a little bit. Not the men, only women. But men are supposed to keep their knees and keep their shins straight. But we are talking about the method of Salah for ladies. So I'm talking to ladies. Their ladies are supposed to keep their shins straight in ruku. And that is, what do you mean by it? Bending the knees a little bit. Okay. And this, if you do it, that means you are performing a sunnah. Another one is do not straighten your back. Okay. Your back. You are not supposed to straighten your back. Do not stretch it. This is also sunnah. Now, okay, now you are in the ruku. Okay. Now your position is now imagine that your position is now is ruku. So what do you read in ruku? Now the time has come to read something that's saying Subhana Rabbi Yal Azeem. Subhana Rabbi Al Azeem. Now saying it 3 times in ruku. When you say it 3 times in ruku, what are you doing? Are you doing farz? Are you doing wajib? Are you doing sunnah? So you can see here, I have written for you sunnah. That when you say Subhana Rabbi Al Azim 3 times in ruku, you're doing it as a sunnah. Okay. If anybody misses it by mistake, the namaz will not be invalid. Namaz will be still completed. Okay. But the next step, now make sure, okay, let me show it. Now making sure the Tadeel is very important point. Tadeel, what is it? What do you mean by Tadeel? Tadeel means to calm down, okay? To stay for about 3 seconds. Now, making sure the Tadeel, you may imagine that you are in the position of Ruku at the moment, right now, and now you're learning about the Tadeel. Tadeel means you have to stay, that is, staying contented in Ruku, staying calm in Ruku. I mean, don't hurry up, never. Okay, if you don't hurry up, if you're not quick in namaz, and you are calm, that is wajib. If you don't do it, if you do the ruku quickly, you miss the wajib, and your namaz, your salah will be invalid, and you'll be supposed to do sajda sahab in the end. So make sure you do it. You make sure the tadil. Okay, for the people who would like to see this knowledge in Urdu, they can see it here. I have written them. रुकू करना, रुकू इटसेल्फ वो एक फर्ज है. उसके बाद रुकू में जाते वक्त अल्लाह अकबर कहना, अल्लाह अकबर कहते हुए जो रुकू में गए, ये कहना सुन्नत है. रुकू में इतना झुकना कि बस घुटनों पर हाथ रख दे. कौन? औरत जी. वरना अगर आदमी होगा तो वो आदमी तो अपने घुटनों को मजबूती से पकड़ेगा. जी, आदमियों के लिए भी हम अलग से इसकी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे. अभी सिर्फ ये काम औरतों के लिए है. रुकू में इतना झुकना कि बस घुटनों पर हाथ रख दे, यानी इसमें इस्लाम ये चाहता है कि औरत ज्यादा ना झुके, कम झुके. पूरे घुटने पकड़ लेगी अपने दोनों हाथों से तो ज्यादा झुक जाएगी, और इस्लाम इस चीज को पसंद नहीं करता. इस्लाम चाहता है कि औरत का पर्दा नमाज में भी बरकरार रहे. इस्लाम अपनी और अल्लाह ताला अपनी हर बंदी से बहुत मोहब्बत फरमाता है, और वो नहीं चाहता कि वो अब बंदी जो है वो किसी लाइफ के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी कोई ऐसी पोजीशन ले लोगों के सामने कि जो उसकी शर्मो हया के अगेंस्ट हो. तो वो नमाज में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को ये तरीका सिखाया है कि नमाज में भी मैं इस बात को पसंद नहीं करूंगा
अल्लाह ताला फरमाता है कि औरत बस खाली इतना ही झुके जितना कि वो अपने घुटनों को टच कर ले। अच्छा, उसके बाद घुटनों को जो टच करेगी तो उंगलियां खुली होंगी कि मिला के रखेगी? देखिए नीचे लिखा है कि रुकू में औरत घुटनों पर हाथ रखते वक्त उंगलियों को मिलाकर रखना सुन्नत। रुकू में घुटनों पर जोर न देना सुन्नत। रुकू में पिंडलियों को सीधा खड़ा ना रखना। पिंडली तो आप समझते हैं ना, शिन्स, आपके टखनों से लेकर जो घुटने तक का जो हिस्सा है, घुटने से ऊपर तक का, ये जो आपकी पिंडली है, इसको आपने ना थोड़ा सा खम देना है, यानी घुटनों को खम देना, सीधी नहीं करनी, थोड़ा सा खम देना, थोड़ा सा घुटनों को मोड़ के रखना, जस्ट अ लिटिल बिट, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट ना हो जाए मर्दों की तरह से। ये औरत का इसके अंदर पर्दा है। इस्लाम औरत को रिस्पेक्ट दे रहा है, रिस्पेक्ट दिए औरत को। और फिर पीठ, रुकू में अपनी पीठ को ना फैलाना, ना फैलाना, सीधा ना रखना, स्पेशली ये बात बताई गई है, बल्कि क्या करना, झुका कर रखना। देखिए ये बात लिखी हुई है, ये ऐसा करना औरत के लिए सुन्नत है। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या करेगी? अच्छा, अब वो तो आ गई है भाई, उसने घुटनों पर अपने दोनों हाथों को टच भी कर लिया है, उसने अपनी पीठ को ज्यादा फैलाया भी नहीं है, बल्कि उसकी पीठ जो है वो उभरी हुई है, उभरी हुई है, उठी हुई भी सी है। ओके, रुको स्टार्ट है। अब पढ़ना है। रुकू में 3 बार सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, ये पढ़ना है, ये सुन्नत है। हाँ अलबत्ता जो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहलाता है तादील। तादील के आगे लिखा है कि यानी रुकू में इत्मीनान से ठहरना। इत्मीनान से अगर नहीं ठहरा तो इसका मतलब है कि उसने तादील नहीं की, जल्दी से रुकू किया और जल्दी से खड़ा हो गई, सॉरी, खड़ी हो गई औरत। अगर वो जल्दी से रुकू की और जल्दी खड़ी हो गई तो क्या होगा? फिर उसका तादील छूट गया। तादील छूटने का मतलब है वो कैटेगरी क्या थी? वाजिब की कैटेगरी थी। वाजिब छूट गया, इसका मतलब है कि नमाज जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। और आखिर में सजदा साफ जो करना पड़ेगा, अगर आखिर में सजदा साफ करना भी भूल गई फिर तो नमाज ही नहीं हुई। तो ये बड़ा एहतमाम करना है इस बात का, तादील का। अच्छा, तादील वैसे मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूं। देखें, तादील में कोई सोचे कि भाई कितनी ड्यूरेशन तक के लिए हमें ठहरना है तादील में। तो तादील में हमें पता है इतनी ड्यूरेशन तक ठहरना होता है कि जितनी ड्यूरेशन में कि कोई शख्स 3 मरतबा ये पढ़ ले, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैंने 3 मरतबा पढ़ लिया, कितना टाइम लगा? शायद 3 सेकंड। और कोई अगर देर तक का पढ़ने वाला होगा तो उसके लिए शायद डबल कर लें, 6 सेकंड। तो एटलीस्ट आई मीन 3 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक उसको रुकू में ठहरना लाजमी है। ये तातील है। हाँ, जब वो ये पढ़ेगा 3 मरतबा, रुकू की जो तस्बीह होती है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, तो ऑटोमेटिकली उसका वो वाला ड्यूरेशन तो इसी में कवर हो गया ना। वाह, इस ध्यान ये रखना है कि सुबहाना रब्बियल अज़ीम, ये 3 वर्ड्स हैं, इनको इतनी जल्दी जल्दी अदा नहीं करना है कि कोई सुने तो उसको समझ ही ना आए कि ये क्या पढ़ा था। नहीं नहीं नहीं, इसको बड़ा ठहर ठहर के अदा करना होता है। तो यूं हमारा रुकू का पोर्शन मुकम्मल हुआ जब कोई शख्स जो है, औरत जो है, वो 3 मरतबा सुबहाना रब्बी अल अज़ीम पढ़ लेगी, उसका रुकू मुकम्मल हो जाएगा। गोया कि उसका एक फर्ज मुकम्मल हो गया, जो कि रुकू इटसेल्फ फर्ज था। अब वो क्या करेगी? नेक्स्ट स्टेप में वो औरत खड़ी हो जाएगी वापस, और उसका खड़ा होना कहलाएगा क्या? कौमा। तो अब हम चलते हैं अपने कौमा वाले स्टेप की तरफ।